So, hi Sham, you can start the session now. Okay, I'm not able to see myself on YouTube stream. Okay, just a second. Okay. Are you able to see my screen? So, Sham, I've shared the link with you. You can just check. You're visible to the audience. Okay. Okay, hello guys. Hope you all can hear me. Can you please post a hi in the chat if you can hear me? Okay, thank you guys. So I hope all of you are trading in the market or are going to start trading. How was the day for you today? Okay, I'll tell a few things about myself. Hi, just a second, Sham. Yeah. You have shared your screen. Like, can you like stop it as of now? For the type. Yes, it's fine now. It's fine. Yes. Okay. Okay, guys. So I am Syam. I'm an electronics engineer by vocation. I have been trading the market since 2007. I have two ventures built around stock market, T7 Wealth Creators Private Limited and T7 Securities Private Limited. So we do a lot of custom pine coding for clients. We develop customized strategies for clients. We do standard trading strategies for clients. We are also an authorized partner for Dhan. And today, we are going to talk about PineScript and how we can integrate PineScript with Dhan. I hope a lot of you are trading with Dhan, and Dhan is the only broker currently who has this webhook feature integrated with TradingView. So anyone who has a PineScript and a TradingView subscription can use the webhook feature by Dhan to automatically place orders in Dhan platform. So I've seen many posts in community with doubts regarding how to do this. So we thought in tandem with Dhan, we'll have a session like this where we'll explain firstly PineScript, the basics of it, and then also tell you how to add the Dhan webhook feature on your PineScript code so that you can automatically place orders on Dhan platform. Okay, I think we can start now. I hope to carry on with the session in English. If any of you want a translation in Hindi for any specific part of the presentation, you can let me know. I can translate that portion for you in Hindi. Also, first 30 minutes, I'll be explaining the abstract concepts about Pine language. The next 30 minutes, we'll do a Pine script together. I believe the best way to learn programming is by doing programming. So last 30 minutes, that's exactly what we are going to do. So be ready with your TradingView account on your laptop or a desktop where you can actually code along with me.
हे हाय सैम, सॉरी टू इंटरप्ट। आई गेस बहुत सारे लोगों का ना कमेंट्स आ रहे हैं कि दे वांट द सेशन इन हिंदी, सो इफ यू कैन लाइक switch it to Hindi or English for everyone. Hi Sham. Hello. Sham, are you there? हेलो. Yes, you're now audible, Sham. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू. तो साथियों, आपका नमस्कार है. आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन. आज हम पाइन स्क्रिप्ट और धन के बारे में बताने वाले हैं. पहला 30 मिनट्स, आधा घंटा हम पाइन स्क्रिप्ट के थ्योरी पढ़ेंगे. उसके बाद आधा घंटा हम एक्चुअल में कोडिंग करेंगे. तो आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ट्रेडिंग व्यू का जो टर्मिनल है वो ओपन रखना. Last 30 minutes, we are going to do Pine script coding after 30 minutes of theory. So be ready with your TradingView account in your PC or laptop. ठीक है? एक मिनट. हेलो अभिषेक. Yes, sir. My my PPT slide I've changed on my screen. It is not reflecting in the YouTube stream. Uh, I guess it is lagging, sir. It's when you're now able, like you're visible right now, and the screen is also. I guess it is lagging a bit. Yeah, it is lagging. It is still on the first screen, but I've moved on to the second screen, but it is not yet updated there in YouTube. So, you can continue, Sham. Like I guess a lot of people can see your screen. Yeah, but the problem is the slide is not changing in the screen. So, but Sham, what you can do is you can stop sharing the screen and and again give it a try. okay, It is now visible. okay.
Sham, can you reshare the screen again? Yes, now it's perfect. You can start with the session now, Sham. The screen has been changed. Yes. Yeah. Okay, so Pine is a lightweight scripting language that runs on TradingView servers. It enables traders to create their own tools for trading. तो पाइन जो है एक लाइटवेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ट्रेडिंग व्यू का, जो ट्रेडिंग व्यू के सर्वर्स पे चलता है। और पाइन के सहारे आप जो भी आपका ट्रेडिंग आइडिया है उसको एक अल्गो स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपना जो भी आइडिया है उसको चार्ट में प्लॉट कर सकते हो। आप आपके आइडिया को वैलिडेट कर सकते हो हिस्टोरिकल डेटा में बैक टेस्ट करके। इन सब के लिए पाइन एक अच्छा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको एक लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई एक्सटर्नल पैकेज या लाइब्रेरी में डिपेंडेंसी नहीं है। ये बस ट्रेडिंग के जो भी रन टाइम एनवायरनमेंट है उस पे चलता है। और पाइन एक बड़ा पावरफुल लैंग्वेज है, पर पाइन कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है, न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू, कैपेबिलिटीज एक्सटेंड हो रहे हैं ट्रेडिंग पाइन का ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर आप कोड एक वर्जन ऑफ पाइन में करो और ट्रेडिंग व्यू पाइन लैंग्वेज का वर्जन अपडेट करते हैं तो आपको अपना कोड भी अपडेट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप एक प्रायर वर्जन में आपने काम किया, सिंटैक्स सेमांटिक्स सब दूसरे वर्जन में चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, पाइन अब बड़ा पावरफुल है लेकिन बाद में लैंग्वेज का सिंटैक्स सेमांटिक्स चेंज हो सकता है। अगर ट्रेडिंग व्यू उनके तरफ से चेंज कर रहे हो तो उस वक्त आपको जो भी कोड आपने लिखा है आपको शायद कन्वर्ट करना पड़े। जब मैंने शुरू किया पाइन का वर्जन V1 था, अब ये V5 में है। कई बार मैंने वर्जन अपग्रेड करते वक्त अपना कोड चेंज किया है, इसीलिए बात ध्यान रखने के लिए आपको मैंने कहा है ये बात। अब पाइन स्क्रिप्ट, मैंने कहा कि पाइन स्क्रिप्ट जो भी कोड आप लिखते हैं वो ट्रेडिंग व्यू के सर्वर्स में चलता है, और इस कारण से ट्रेडिंग व्यू बहुत सारे लिमिटेशंस लगाते हैं एग्जीक्यूशन करते वक्त। ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन लिमिट्स जो अमाउंट ऑफ डेटा आपको अवेलेबल है बैक टेस्टिंग करते वक्त, या जो आपका पाइन कोड आपने लिखा है उसका एग्जीक्यूशन टाइम, उस पे लिमिट लगाते हैं ट्रेडिंग व्यू। कुछ ऐसे लिमिट्स होते हैं जो ग्लोबली हर क्लाइंट्स पे लागू होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके प्राइसिंग प्लान के हिसाब से आप पे लगता है। अगर आप फ्री प्लान में हो तो आपका अमाउंट ऑफ डेटा, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ फंक्शंस कम होगा। अगर आप एक पेड ट्रेडिंग व्यू प्लान में है ये सब ज्यादा होगा। पर अगर आप बेसिक कोडिंग करना चाहते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लिखने हैं या बहुत सारे हिस्टोरिकल डेटा में आपको ट्रेडिंग टेस्टिंग करना पड़ेगा तो आपको पेड प्लान्स पे जाना पड़ेगा। मैं एक बार ये सब इंग्लिश में भी कह देता हूँ। Pine is a lightweight scripting language because there are no dependencies on any external packages or libraries. Pine is constantly being modified by TradingView. So if you write your code in one version of Pine, sometimes you may need to upgrade when there is an upgradation from TradingView side. Syntax, semantics all may change from one version to another. So be mindful of that fact. Since PineScript runs on TradingView servers, TradingView does impose execution limits. The limits are broadly on the amount of data that can be accessed while you're backtesting,
or the execution time limit of your strategy or script file. Typically, if you are on a free plan or a lower price plan, the amount of data and the execution time allocated to you by TradingView is less compared to somebody who is on a higher paid plan. But if you are doing basic coding in Dhan, basic coding in TradingView, basic testing in TradingView, these limits shouldn't bother you. Only if you are doing very long piece of code, very complex codes, the execution limits delays will come into play. Or if you are testing with a large historical set of data, then this amount restriction may come into play. Otherwise, you are just fine. So आज हम पाइन के सारे जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताना नहीं जा रहे हैं. हम बस बेसिक्स आज सीखेंगे और एक कोड करेंगे. तो मैं आपको आज ट्रेडिंग बुक के जो फाइल टाइप्स है, एग्जीक्यूशन मॉडल है, उसके बारे में बताऊंगा. वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा. फंक्शंस के बारे में बताऊंगा. फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा. स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, पाइन एडिटर, उसके बारे में बताऊंगा. एडिशनल रिसोर्सेस दूंगा जिसके सहारे आप पाइन के बारे में और पढ़ सकते हो. और लास्ट 30 मिनट्स जैसे मैंने कहा एक कोड करेंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे. So today I'm going to discuss about TradingView file types and execution model, variables and operators, functions, flow control, script structure, Pine editor, and additional resources where you can learn more about Pine. And finally, last 30 minutes, we are going to do a code in TradingView, stressing on all the things that we learn in the theory 30 minutes. Okay. This is not a very comprehensive tutorial on TradingView. This is just touching on the basics of Pine to just get you started. The additional resources will point you towards resources where you can build on what I'm saying today to create your own more complex strategies if you want to. तो पहले हम फाइल टाइप्स के बारे में सीखेंगे. एक सेकेंड. ओके. ट्रेडिंग व्यू में दो तरह के फाइल्स होते हैं, स्ट्रैटेजी फाइल और स्टडी फाइल. स्ट्रैटेजी फाइल अगर आपका एक लॉजिक है, आपको उसको डेटा में बैक टेस्ट करना है तो आप स्ट्रैटेजी फाइल का यूज करोगे. अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करना है आप स्ट्रैटेजी फाइल का यूज करोगे. स्टडी फाइल अगर आपको बस प्लॉटिंग करना है, अलर्ट्स जनरेट करना है तो आप स्टडी फाइल का इस्तेमाल करोगे. स्टडी फाइल का एडवांटेज ये है कि वो फास्ट है. स्ट्रैटेजी फाइल क्या करता है, जो भी आपका कोड है वो एक ब्रोकर एमुलेटर इंजन है ट्रेडिंग पे, उस पे आपको एग्जीक्यूशन करता है, तो इसलिए थोड़ा स्लो है स्ट्रैटेजी फाइल. तो अगर बस आपको प्लॉटिंग करना है तो आप स्टडी फाइल का यूज करोगे. ठीक है. इन दो फाइल के अलावा एक तीसरा फाइल भी है, लाइब्रेरी फाइल, जो ट्रेडिंग व्यू ने अभी अभी ऐड किया है. उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूंगा, वो एडवांस प्रोग्रामर्स के लिए है. आपके लिए वो जानने की आवश्यकता नहीं है अभी. So TradingView has two kinds of files, strategy file and study file. We will use strategy file when we have to backtest our logic on historical data. We can, if we want to directly trade on Dhan, we want to generate alerts with webhooks, custom messages, etc. We will use the strategy file. We'll use study file only if we need to plot the data, generate custom alerts and alert conditions. The advantage of study file is that it is very fast in execution relative to strategy file. Strategy file sends the orders to a broker emulator engine in TradingView, which is why it is slower than the study file. Now we'll learn about the execution model of Pine language. So Pine is an array or vector processing language. Whichever technical analysis software you take, Ami Broker, MetaTrader, NinjaTrader, etc., Pine is just like that. It's an array processing language
which means data is represented in the form of arrays. An array is nothing but a list of items, all the primary data inputs on the chart, the open array, high array, low, close, volume array, and open interest wherever applicable. Usko ek array, it is represented as an array. Any derivative variables that we create out of the primary variables, it is also represented as arrays. Most functions in Pine will operate on arrays and give an output in arrays. The advantage of array processing is that it is very fast. Instead of simply manipulating each individual location of a data value, all the locations of the array are simultaneously processed while the code is executed, which makes array processing really fast. In a technical analysis software where there could be 10,000, 20,000 candles, the array method of processing is the most efficient and fastest way to convert your logic into an executable code, which is why most softwares adopt this kind of method. Pine जो है एक array processing language है. Array माने एक list of data items. Pine का जो primary data points है, open, high, low, close, volume and open interest, उसको एक array के रूप में internally represent किया जाता है. आपके अरे में उतने एलिमेंट्स होते हैं जितना कैंडल्स होते हैं चार्ट में. अगर आपके चार्ट में 10 कैंडल हो, आपके अरे में भी 10 एलिमेंट्स होंगे. एनी वेरिएबल, अब जो भी आप इस प्राइमरी वेरिएबल के सहारे जो भी इंडिकेटर बनाते हो, वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, सबको भी अरे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा. उसमें भी उतना ही एलिमेंट्स होगा जितना चार्ट पे होता है. और जो भी पाइन के स्टैंडर्ड फंक्शंस है वो भी अरे में प्रोसेस करता है डेटा को और अरे में आउटपुट देता है. ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स है पाइन जिसके सहारे आप ये अरे प्रोसेसिंग मेथडोलॉजी को ब्रेक कर सकते हो. लेकिन मेरा सुझाव है आपसे कि आप ये जो अरे प्रोसेसिंग स्कीम है उसी के हिसाब से अपना कोड लिखो, क्योंकि अगर आपने इसको ब्रेक किया आपका कोड स्लो हो जाएगा. कभी कभी ऐसे स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट आते हैं जहां हमें ये करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर जो एप्लीकेशन है वहां पे आपको ये अरे प्रोसेसिंग ही काफी है. तो एक अरे के रूप में आप डेटा का सोचो, डेटा को मैनिपुलेट करो, कोड लिखो. वही द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग योर कोड इज द अरे प्रोसेसिंग मेथड. सो ऑलवेज think in terms of arrays, not as a single variable. Each and every variable that you declare, each and every data element that you use is mostly arrays in Pine. Therefore, always do your code in sync with the array processing methodology of Pine. Otherwise, you're going to make your code very, very slow. Now, in a chart, you will have historical candles and real-time candles. All the candles in history where there is no further data update, these are called historical candles. Okay. Any candle which is getting updated with new data, which is typically the rightmost candle in a chart, when the market is live, that is a real-time candle. In a normal software program, what happens is when you trigger an execution, the code will run from start to end and stop. In TradingView Pine, the code is executed from top to bottom for each candle. So if there are 10 candles, the code is executed 10 times, right? This is the case with historical candles, okay, where there is no further data update. Every historical candle, the code is executed once. For real-time candle, where the value is changing in a live session, each time there is an updation of price or volume, the computation happens again from start to end of the Pine script file. For a strategy file, the calculation is always done at the close of a candle only. So if you are in a real-time candle, the strategy file will compute
till the candle before the real time candle only. There are certain constructs with which we can make the strategy file compute in a real time candle, but typically we don't use it. Study files, however, gets executed in the real time candle as well. It has different implications depending upon how we are using it. We'll not go more deep into this, but I'll explain a little bit more while we are doing the actual code. So TradingView में historical candle और real time candles होते हैं चार्ट पे. एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जब भी कोड को ट्रिगर करते हैं एग्जीक्यूशन, वो स्टार्ट से शुरू होके एंड तक एग्जीक्यूट करता है और स्टॉप हो जाता है. ट्रेडिंग व्यू पॉइंट में ऐसा नहीं है. जितने भी कैंडल्स है, 10 कैंडल्स है तो 10 बार आपका जो पाइन स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. यानी हर कैंडल पे एक बार आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है. ये हिस्टोरिकल कैंडल के बात कर रहा हूं मैं. रियल टाइम कैंडल्स में थोड़ा डिफरेंट है. रियल टाइम कैंडल्स वो है जो अपडेट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं न्यू वैल्यू से लाइव सेशन पे. वहां पे जब भी एक न्यू प्राइस वैल्यू आएगा तब आपका कोड स्टार्ट से एंड तक एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है. तो हिस्टोरिकल कैंडल और रियल टाइम कैंडल में एग्जीक्यूशन डिफरेंट है. स्ट्रैटेजी फाइल हमेशा कैंडल के क्लोज पे एग्जीक्यूट होता है, तो रियल टाइम कैंडल में वो एग्जीक्यूट नहीं होता. प्रीवियसली जो हिस्टोरिकल कैंडल क्लोज हो गए हैं वहां तक उसका एग्जीक्यूशन रहता है. रियल टाइम कैंडल में स्टडी फाइल जो है उसका एग्जीक्यूशन होता है. ठीक है. तो जो भी वैल्यूज आपको एक रियल टाइम कैंडल में स्ट्रैटेजी फाइल में मिलेगा वो प्रीवियस कैंडल के वैल्यू है. एक स्टडी फाइल में जो भी वैल्यू आपको रियल टाइम कैंडल में मिलेगा वो उसी कैंडल का वैल्यू है. यही बेसिक डिफरेंस है. इसका इम्प्लीकेशन है जब हम कोड करते हैं. इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा. जब हम कोड करेंगे उसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा. ठीक है. नाउ वील लुक इनटू variables. So in a normal program, we need to store data, we need to manipulate data which keeps changing, and this is stored in memory of the hardware device, in this case TradingView server. In programs we give a specific name to this memory location. These are called identifiers. So in your program, any entity that stores data which you can further manipulate, it is called a variable. Each variable you will uniquely identify in your code with a specific username, user-defined name. The name can contain uppercase letters, lowercase letters, digits, or underscore. But the name of the variable can start only with a letter and an underscore. It cannot start with a digit. Okay. Be mindful of that. All the variables has to be declared before they are used in code. The basic syntax of declaring a variable is given here. First, we will specify a declaration mode, a data type, an identifier name, and then we'll assign some value to it. It can be a constant value or it can be an expression that evaluates to a fixed value. In the case of a function, in order to store the return values, we can have a tuple. A tuple is nothing but an ordered list of variables separated by a comma enclosed inside a square bracket. ठीक है. तो एक नॉर्मल प्रोग्राम में आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा. डेटा को हार्डवेयर डिवाइस के मेमोरी में स्टोर किया जाता है. आपके कोड में इन मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाएगा. ऐसे नेम्ड मेमोरी लोकेशंस को हम वेरिएबल्स कहते हैं. वेरिएबल्स के नाम को आइडेंटिफायर कहा जाता है. इस आइडेंटिफायर नेम को हम अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. पर जो भी नाम हम देंगे वो बस अल्फाबेट्स या अंडरस्कोर से उसका नाम शुरू हो सकता है
डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है। हर जो वेरिएबल हम कोड में यूज करेंगे उसको आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट ये है कि पहले आप डिक्लेरेशन मोड दोगे, उसके बाद डेटा टाइप मेंशन करोगे, एक आइडेंटिफायर नाम दोगे, उसके बाद इक्वल साइन के बाद राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन या कांस्टेंट वैल्यू आप देंगे जो इवेलुएट होता है, एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू which can be assigned to the variable name that you are giving. आप एक वेरिएबल नेम के बजाय एक कॉमा सेपरेटेड लिस्ट भी दे सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप एक फंक्शन कॉल करते हो, फंक्शन एक से ज्यादा रिटर्न वैल्यूज देते हैं, उस समय आपको ऐसे मल्टीपल वेरिएबल जिसको टपल कहा जाता है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ द डिक्लेरेशन मोड, the declaration mode, if you are not specifying, it will be taken as none. Like I said before, the TradingView Pine code is executed once for every candle. If your declaration mode is none, it means that the variable will be initialized at every candle. Every candle, when the code starts executing, the variable will be initialized to the value the user is specifying. If no value is specified by the user, then NA or not available data entity is assigned to the variable by TradingView Pine compiler. Now, if you want the state of a variable to be remembered from one bar to the next, then we need to specify a declaration mode called var. If you specify declaration mode as var, the variable will be initialized to one value that you give at the very first candle. Thereafter, there will not be any initialization. The variable state can be changed in subsequent candles, and that state information will be remembered. This is the case with historical candles. In a real-time candle where the data is continuously getting updated, var is not going to be useful if you want to remember the previous executed value of the variable. There we need to give a special declaration mode called var IP or variable intrabar persist. If you qualify a variable like that, for each execution of the code in a real-time candle, the previous value stored in the variable will be remembered and can be accessed for further processing in your code. डिक्लेरेशन मोड के बारे में बता रहा था। डिक्लेरेशन मोड तीन तरह के होते हैं, वार, वार आईपी और नन। अगर आप कोई भी डिक्लेरेशन मोड नहीं देते हो, ट्रेडिंग व्यू कंपाइलर समझ जाएगा कि इसका डिक्लेरेशन मोड नन है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोड एग्जीक्यूट होता है हर कैंडल पे, इसका जो वैल्यू होता है उसको इनिशियलाइज करते हैं हर कैंडल पे। 10 कैंडल है, 10 बार कोड एग्जीक्यूट होता है, 10 बार इसका वैल्यू इनिशियलाइज होता है। अगर आपको एक वेरिएबल पहले इनिशियलाइजेशन के बाद जो भी स्टेट उसका है, वैल्यू उसका है, उसको याद रखना है सब्सिक्वेंट कैंडल्स पे, तो आपको वार डिक्लेरेशन मोड देना होगा। वार जो वेरिएबल्स को देते हैं वो पहले कैंडल पे जो भी इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो याद रखेगा, और सब्सिक्वेंट कैंडल्स में उस वैल्यू के साथ या जो मैनिपुलेशन होता है सब्सिक्वेंट कैंडल्स में वो आपको सब्सिक्वेंट कैंडल्स में मिलेगा कोड में यूज करने के लिए। ये मैं हिस्टोरिकल बार्स का बात कर रहा हूं। वार हिस्टोरिकल बार्स में चलेगा, लेकिन रियल टाइम बार में अगर आपको प्रीवियस एक्सिक्यूशन पे वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करना है तो वार आईपी नाम का एक डिक्लेरेशन मोड देना पड़ेगा। वार का मतलब है वेरिएबल इंट्राडे इंट्रा बार परसिस्ट। तो रियल टाइम बार में जब भी न्यू प्राइस या वॉल्यूम आता है तब कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट से एंड तक होता है। ईच एक्सिक्यूशन में जो भी वेरिएबल का वैल्यू है अगर बार आईपी आप देते हो तो वो याद रखता है। ठीक है। डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन और कलर।
or even user defined types. Okay, any variable, like we said, need to be declared before we use it, but the data type of the variable need not be mentioned explicitly by the user. Typically, the compiler would automatically compute what is the data type stored in the variable depending upon the kind of value that you mention while declaring the variable. So if you assign an integer to a variable, a declaration type, compiler will understand that this is an integer variable. If you assign a float, compiler will understand that it is a floating variable. We typically give the data type explicitly to increase the readability of the code. That's all. Now with the variables, we can also create complex data structures. In Pine, we can have user-defined arrays, two-dimensional arrays called metrics, and key value pairs like maps. We'll not discuss more about this. This is more for advanced programming. There are also many built-in variables in Pine, which are related to price and volume, state of a bar, symbol information, time frame information, and strategy order related. तो पाइन में जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूल हो सकता है, कलर या यूजर डिफाइंड टाइप्स हो सकते हैं. ठीक है, आपको ये जो टाइप है इसका एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन नहीं करने की आवश्यकता है. अगर आप कोई डिक्लेरेशन नहीं देते हो, कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि क्या वैल्यू आपने दिया है. टिपिकली आप इसका डेटा टाइप तब देते हो जब आपको कोड का रीडेबिलिटी बढ़ाना हो. अदरवाइज पाइन कंपाइलर को समझ आता है कि आपने इंटीजर दिया है तो इंटीजर वेरिएबल है, फ्लोट दिया है तो फ्लोट वेरिएबल है. ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. ये आम वेरिएबल्स के अलावा हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स भी पाइन में क्रिएट कर सकते हैं, लाइक यूजर डिफाइंड अरेज, टू डायमेंशनल अरेज कॉल्ड मैट्रिक्स, या की वैल्यू पेयर्स कॉल्ड मैप्स. बहुत सारे बिल्ट इन वेरिएबल्स भी है पाइन में जो प्राइस वॉल्यूम से डील करता है, बार स्टेट पे डील करता है, बार सिंपल इंफॉर्मेशन पे डील करता है, टाइम फ्रेम में डील करता है, या स्ट्रैटेजी ऑर्डर रिलेटेड होता है. ठीक है, ऑपरेटर्स. तो हमारा ऑपरेंड जो होता है हमने देखा ज्यादातर अरे होता है. ठीक है, एक वेरिएबल का नाम होता है तो वो वेरिएबल एक्चुअली में एक अरे है. तो उस ऑपरेंड को हम ऑपरेटर्स के सहारे ऑपरेट करते हैं. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. कंपैरेटिव ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा. लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट एंड और. असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल साइन. रीअसाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कॉलन एंड इक्वल के साथ बनता है. तो जब वेरिएबल को पहले हम वैल्यू डिफॉल्ट में देते हैं, इक्वल साइन का यूज कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको रीअसाइन करना पड़ेगा तो आपको रीअसाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा. तो एक कॉलन और इक्वल से ये रीअसाइनमेंट ऑपरेटर बनता है. टेर्नरी ऑपरेटर है जो एक कंडीशनल ऑपरेटर है, विच इज लाइक एन इफ एल्स स्टेटमेंट. अगर आप एक कंडीशन दोगे, कंडीशन ट्रू होगा तो पहला ऑप्शन एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ऑप्शन एग्जीक्यूट करेगा. एक हिस्ट्री रेफरेंस ऑपरेटर है. मैंने कहा कि हर वेरिएबल एक अरे है पाइन में, तो अरे का एक स्पेसिफिक एलिमेंट आपको एक्सेस करना पड़ेगा. तो आपको वो अरे एलिमेंट का पोजीशन हिस्ट्री रेफरेंस ऑपरेटर के सहारे बताना पड़ेगा और आप उसके सहारे उसको एक्सेस कर सकते हो. सो इन पाइन मोस्टली वी हैव अरेज. Even though we just have variable names in code, each of these are arrays like I mentioned before. And these arrays are the operands for operators. We have arithmetic operators, comparative operators, logical operators, assignment operators, reassignment operators. Reassignment operator we use when we need to reassign values to the variables. First assignment can be
equal sign. Second assignment has to be with a reassignment operator, which is a colon followed by an equal sign. We have ternary operator, which is a conditional operator. We'll give a condition. If the condition is true, the first option subsequent to the question mark will be executed. If it is false, the next one will be executed. We also have a history reference operator, by means of which if we give an index value of an element in the array, we can access that specific value. Okay? Next, we move on to functions. If we have a piece of code that we need to execute at different parts of the code, we need to create a function block. Once we create a function block, we can just call the function at wherever we need to use that particular piece of code. This makes the code more organized, efficient, and easy to maintain. There are many built-in functions in Pine which does most of the basic things. Each of these functions are maintained in specific namespaces. So all the math functions are inside math namespace. All the technical analysis indicators are in TA namespace. Any request functions like requesting for the code of a particular symbol, earnings, fundamental data, etc. वो request namespace में है. Any string functions are in str namespace. Any inputs that we take from user, that is mapped in the input namespace. Any colors are mapped in the color namespace. Any order related stuff, it is inside the strategy namespace. तो पाइन में जो अगर आपको एक कोड यूज करना है, आपके पाइन स्क्रिप्ट में कई जगह आपको एक ही कोड यूज करना है, तो कॉपी लाइंस कॉपी करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक में उसको डिफाइन कर सकते हैं. इसको हम फंक्शंस कहते हैं. एक बार आपने कोड को फंक्शन में इनकैप्सुलेट किया, फिर उस फंक्शन को कोड के कई जगहों पर आप यूज कर सकते हैं. ट्रेडिंग व्यू पाइन में बिल्ट इन फंक्शंस बहुत है. जो भी उसका कोर फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब से एक नेम स्पेस में उसको सेग्रीगेट किया जाता है. तो मैथमेटिकल फंक्शंस करने के लिए एक मैथ नेम स्पेस है. टेक्निकल इंडिकेटर्स के लिए ये नेम स्पेस है. डेटा अगर लेना है किसी सिंबल का या फंडामेंटल डेटा या अर्निंग्स एक्सेट्रा आपको लेना पड़े तो आपको रिक्वेस्ट नेम स्पेस है. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए स्ट्रिंग str नेम स्पेस है. अगर आपको फ्रंट एंड से या GUI से आपको एक इनपुट लेना है तो इनपुट नेम स्पेस है. कलर फंक्शंस के लिए कलर नेम स्पेस है. और सभी ऑर्डर रिलेटेड जो फंक्शंस है उसके लिए स्ट्रैटेजी नेम स्पेस है. अगर आपको किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना है तो पहले नेम स्पेस का नाम देना पड़ेगा, एक डॉट ऑपरेटर देना पड़ेगा, उसके बाद वो जो भी फंक्शन है उसका नाम लिखना पड़ेगा. ठीक है. Standard functions are there in Pine, like I told before, but there are some functions which are not part of any namespaces. These can be directly accessed. So some of the important ones are plot functions to draw graphics on the TradingView chart. There are also alert functions to generate alerts, to add alert conditions in the TradingView alert window, etc. We can also define custom functions. These custom functions can have multiple inputs or parameters or multiple values. We mention a function with a user-defined name, give a list of parameters, give an arrow sign, then we define an isolated block of code inside the function name. That isolated block of code need to be indented by 4 spaces or 1 tab to distinguish between the function name and the isolated piece of code. So inside you can have variable declarations, your computational logic, and the last line of the code has to be a variable declaration, or it needs to be an expression that evaluates to a return value. The last line of the code and whatever value it evaluates to is what is returned to the calling section of the code. तो मैंने पहले कहा कि ट्रेडिंग व्यू नेम स्पेस में ज्यादातर फंक्शन को ग्रुप करते हैं. ये नेम स्पेस के बाहर भी कुछ फंक्शंस है. महत्वपूर्ण फंक्शंस प्लॉट है,
प्लॉट के सहारे आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हो। अलर्ट फंक्शन है जिसके सहारे आप अलर्ट जनरेट कर सकते हो। अलर्ट विंडो पे अलर्ट कंडीशंस ऐड कर सकते हो। कस्टम फंक्शंस भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आप अपना एक नाम देके, अपना एक लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यूज देके अपना फंक्शंस भी बना सकते हो। तो फंक्शन का जो नाम है और उसके अंदर जो कोड है उसके बीच 4 स्पेसेस या 1 टैब स्पेस का होना जरूरी है। इससे ही कंपाइलर समझता है कि ये फंक्शन के अंदर वाला कोड है। ठीक है। और फंक्शन का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो एक वेरिएबल होना चाहिए या कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए जो वैल्यू में कंप्यूट हो जाता है। इसी लास्ट लाइन में जो भी आप लिखते हैं उसको ही रिटर्न वैल्यूज के हिसाब से कॉलिंग प्रोग्राम में जाता है। ठीक है। Now we move on to flow control statements. Like I said, the Pine code executes once for every candle. This is the broad flow of the code. But within that execution per candle, we can further control the code execution flow using conditional statements like if else, if else if, or switch statement. Here, any block of code that we put inside these statements, these are executed based on conditions given. We can also use loops where the code gets executed multiple times till one condition is true. There are 2 loops in Pine, for and while. We will not discuss more about this because this is for advanced programming. Like I said, for and while are those statements which will interfere with the array processing method of Pine and therefore not used mostly unless it is very much required in the code for any special cases. Most cases you better off don't use this. Okay. तो पाइन स्क्रिप्ट में जैसे मैंने कहा हर एक कैंडल पे एक बार कोड का एग्जीक्यूशन होता है। इस ब्रॉड एग्जीक्यूशन स्कीम पे और भी कंट्रोल आप ला सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्टेटमेंट्स के सहारे। आपको इफ एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट होता है आप पाइन में। जो भी कंडीशन आप इस स्टेटमेंट्स के अंदर डालते हो कंडीशंस के हिसाब से वो एग्जीक्यूट होता है। अगर आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसको बार बार आपको एग्जीक्यूट करना है तो लूप्स का यूज कर सकते हैं। पाइन में फॉर और वाइल लूप्स हैं। पर फॉर और वाइल अरे प्रोसेसिंग मेथड्स को ब्रेक करता है तो ज्यादातर हम इसका यूज नहीं करते। ओनली स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस आपको है तो आप इसका यूज करेंगे। ज्यादातर बेस लेवल कोडिंग मिड लेवल कोडिंग में हम इसका यूज नहीं करते हैं। हमारे प्रोसेसिंग जो भी मेथडोलॉजी है उसका ही यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा अगर आप ये अरे प्रोसेसिंग मेथडोलॉजी को किसी हिसाब से ब्रेक कर दोगे आपका कोड स्लो हो जाएगा। तो ये प्रेफरेबल मेथड नहीं है। ठीक है। Now we come to script structure. A Pine code needs to have a certain formal structure. Okay. The first line of the statement must start with a compiler annotation specifying the Pine version number. All Pine script must contain one declaration statement which says whether it is an indicator or a strategy. All the study files must contain at least one call to a plot function which plots some value on the chart. All strategy files must contain a call to at least one strategy function call. Comments are added using forward slashes, 2 forward slashes. Compiler annotations can start with 2 forward slashes and @ symbol or 2 forward slash and hash symbol. तो अब हम स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। एक पाइन स्क्रिप्ट का एक स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। पहला लाइन जो है वो एक कंपाइलर एनोटेशन है जो कंपाइलर को बताता है कि किस वर्जन का यूज हो रहा है। पाइन स्क्रिप्ट में एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होना चाहिए जो कहता है कंपाइलर को ये स्टडी फाइल है या स्ट्रेटजी फाइल है। हर स्टडी फाइल में एक प्लॉट फंक्शन का होना जरूरी है। हर स्ट्रेटजी फाइल में एक स्ट्रेटजी कॉल का होना जरूरी है। कमेंट्स आप 2 फॉरवर्ड स्लैश से ऐड कर सकते हो। कंपाइलर्स को जो इंस्ट्रक्शन या एनोटेशन है वो फॉरवर्ड स्लैश एंड @ और फॉरवर्ड स्लैश और हैश के सहारे आप दे सकते हो।
all statements in Pine script which is of global scope should not start with a white space. Okay. Any local block, which is typically blocks inside conditional loops, functions, etc. These must be indented by a tab or four spaces, and this defines the local scope of the particular statements. We can have multi-line statements in Pine. We can add any number of spaces to indent that this is a multiple line code, provided the number of spaces is not a multiple of 4. Like I said, if it's a multiple of 4, the compiler will think that this is an isolated block inside a conditional loop or a function. So that is not allowed. Otherwise, any number of spaces you can give to indicate that this is a multi-line code. तो पाइन में जो भी जेनरिक स्टेटमेंट्स होता है वो व्हाइट स्पेस के साथ शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टर है कोड का हर लाइन पे वो स्टेटमेंट से ही शुरू होता है, व्हाइट स्पेस का कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन का आइसोलेटेड ब्लॉक है, कंडीशनल स्टेटमेंट का आइसोलेटेड ब्लॉक है, तो उसको लोकल ब्लॉक कहा जाता है। उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जैसे मैंने कहा पहले, एक टैब या 4 स्पेसेस हम देते हैं। मल्टी लाइन्स कोड हम पाइन में डाल सकते हैं। हर हर लाइन पे अलग अलग स्पेस आप डाल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको कि जितने भी स्पेस आप एक लाइन में दोगे वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो एक आइसोलेटेड ब्लॉक है, तो पाइन कंपाइलर सोचेगा कि ये फंक्शन कॉल है या कंडीशनल लूप है, ठीक है। वो नहीं कर सकते। उसके अलावा कितने भी स्पेसेस आप डालना चाहो डाल सकते हो, और पाइन कंपाइलर इंटरप्रेट कर देगा कि जो भी लाइंस आपने लिखा है एक मल्टी लाइन कोड का हिस्सा है, ठीक है। Pine editor. When we develop a code, we need to develop this in a development environment. So Pine in TradingView platform itself gives an editor. This editor is ideal to write Pine scripts because it has syntax highlighting. If we keep the mouse over any default function, it will show help text. It gives quick access to any reference material on Pine by using control click on the specific keywords. It also provides autocomplete feature with control and space. तो पाइन कोड जो है वो आप ट्रेडिंग व्यू का जो पाइन टेक्स्ट एडिटर है उस पे आप लिखेंगे। इस टेक्स्ट एडिटर में आपको सिंटैक्स हाइलाइटिंग मिलेगा, हेल्प टेक्स्ट मिलेगा अगर आप माउस उसके ओवर होवर करते हो, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा अगर आप कंट्रोल प्लस क्लिक करते हो, ऑटो कंप्लीट फीचर भी है अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस करते हो, ठीक है। So I have just run through many of the basic concepts of TradingView Pine. Now here are some references which you can refer to if you want to build on whatever I said. There is an official reference given in the link that I've shown. There is a TV public library where there are a lot of codes given by the TradingView team and the user community. You can add any code on your chart and see how they have used the syntax, how different kinds of logic have been implemented, and so on. On TradingView platform, there is a public chat dedicated to Pine where there are expert programmers. If you have any doubt, you can go to the chat, post your query, and get it answered. Nowadays, we also have AI tools like ChatGPT, Google Gemini, etc., which helps you to do quick coding. It's not very perfect, but it will help you to do coding. तो पाइन कोडिंग का ऑफिशियल रेफरेंस लिंक मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा आप पाइन कोडिंग के बारे में टीवी के जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें पढ़ सकते हो। टीवी का जो टीम है उन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड कोड दिए हैं, यूजर कम्युनिटी ने कोड दिए हैं। आप देख सकते हो कि कितना लॉजिक उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, कैसे हुआ है, सिंटैक्स का यूज कैसे करते हैं, ये सब आप लाइब्रेरी में जो रेफरेंस कोड है उसके सहारे आप देख सकते हो।
ट्रेडिंग व्यू के जो साइट है उसमें एक पब्लिक चैट भी होता है। इसमें एक्सपर्ट पाइन प्रोग्रामर्स होते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पाइन के बारे में कोई भी डाउट हो, इसमें पोस्ट कर सकते हो, वो आंसर करेंगे। इसके अलावा आज के ज़माने में एआई टूल्स भी है, जैसे चैट चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी एक्सेट्रा। इसके सहारे भी आप कोडिंग कर सकते हो। Now, I think we'll do a sample code in TradingView. So before I start coding, I'll explain the rules for this. We are going to run this strategy on a 15-minute Nifty 50 chart and trigger orders on Nifty futures. We will buy when the close is greater than or equal to moving average of close for a given time period. Time period is given by the user. We'll short Nifty futures when close is greater than or equal to moving average or close of moving average of close for a given user length. We'll also add a profit target level and a stop loss level in percentages, again given by the user. तो अब हम एक सैम्पल कोड करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। रूल्स बताता हूं मैं। ये स्ट्रैटेजी 15 मिनट निफ्टी 50 के चार्ट पे एग्जीक्यूट होगा, और ये ऑर्डर्स निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रिगर करेंगे। ये बाई तब करेगा जब क्लोज मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज का लेंथ यूजर देगा। शॉर्ट करेगा तब जब क्लोज मूविंग एवरेज के नीचे है, अगेन मूविंग एवरेज का लेंथ यूजर देगा। हम एक प्रॉफिट बुकिंग टारगेट और लॉस भी लगाएंगे कोड पे, अगेन यूजर सेट करेगा फ्रंट एंड से। तो हम देखेंगे कि एक कोड हम कैसे करते हैं ट्रेडिंग व्यू पॉइंट पे। हमें थन के तरफ से ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। आपको धन ट्रेडिंग व्यू के वेब प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, ऑर्डर्स पे जाना पड़ेगा, उसके नीचे वेब हुक्स है, वहां से मैनेज वेब हुक्स क्लिक करके आपको ट्रेडिंग व्यू वेब हुक यूआरएल जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके नीचे ऑर्डर्स है, वहां पे क्लिक करके आपको सेगमेंट सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर जेसन स्ट्रक्चर भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। हमेशा यूआरएल जनरेट करने के बाद जेसन स्ट्रक्चर क्रिएट करना, क्योंकि उस यूआरएल के हिसाब से एक सीक्रेट कोड इस जेसन में आता है। ये दो चीज आपको धन के प्लेटफॉर्म से लेना पड़ता है। ट्रेडिंग व्यू पे एक प्लेस होल्डर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं जब कोड करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और कोड लिखते हैं। ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट है आप चैट में डाल सकते हो, समय है तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा आपको। ओके। तो समय कुछ ज्यादा हो गया है, तो मैंने एक कोड लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। तो पहले जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रैटेजी
फंक्शन का स्टेटमेंट है। हमने पहले कहा था कि जो भी तरह का फाइल है, स्ट्रेटेजी फाइल या स्टडी फाइल, उसके हिसाब से आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये मैं स्ट्रैटेजी फाइल कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रैटेजी फाइल के सहारे हम ट्रेडिंग व्यू पे ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रैटेजी फंक्शन कॉल है। उस स्ट्रैटेजी फाइल को एक नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी का नाम दिया है। ओवरले मैंने ट्रू किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी है जो हमारे मेन चार्ट पेन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम ओवरले फॉल्स करते हैं तो यहाँ पे एक अलग सा विंडो आ जाएगा। ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चार्ट के ऊपर ही प्लॉट सिग्नल सब चाहिए, इसलिए हम ओवरले को ट्रू करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, पहले हम मूविंग एवरेज का पीरियड हमने कहा हम यूजर से लेंगे, तो हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज किया है। एक डिफॉल्ट वैल्यू 20 दिया है, एक टाइटल भी दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन के सहारे कोई भी स्टेटमेंट्स डिक्लेयर करते हैं तो आपको इसके सेटिंग्स में जाते वक्त ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस सेटिंग्स के ग्राफिक इंटरफेस के सहारे इसका वैल्यूज चेंज कर सकते हो। मैंने कोड पे 3 यूजर इनपुट्स डिफाइन किए हैं। मूविंग एवरेज का लेंथ है, टारगेट प्रॉफिट परसेंट है, और स्टॉप लॉस परसेंट है। ठीक है, सो दीज 3 स्टेटमेंट्स, ये 3 स्टेटमेंट जो है वो यूजर के इनपुट के लिए है। हमने इनपुट फंक्शन का यूज किया है, और ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मैंने कहा ट्रेडिंग व्यू पॉइंट में ये एक्चुअली अरे है। एक नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली एक अरे ही है। ठीक है, जितना कैंडल्स है उतना एलिमेंट्स इसके अंदर होगा। ठीक है, इसके बाद हम मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मूविंग एवरेज। हियर हम वी हैव यूज्ड द नेम स्पेस कॉल्ड टीए। ठीक है, मैंने कहा था ट्रेडिंग व्यू का जो भी फंक्शन होता है वो ज्यादातर नेम स्पेस में सेग्रीगेट होता है। Okay, so I guess the screen was not visible. I'll do it in English once more quickly. The first function needs to be the strategy function. Every file needs to call out whether it is a study file or a strategy file. Here we are using strategy statement. Because this is a strategy file, we need to fire orders to TradingView. Strategy file is the ideal file for that. Like I said in presentation, if you keep the mouse over any particular function, it will display help text. So you can see this. If we do control click, this will open the help text or reference manual. You can read more about each of the standard symbols or statements. This function I'll explain a little later. Now we need to take 3 inputs from user. First input is the moving average period. Second input is the profit target percentage. Third input is the stop loss percentage. Okay? All these 3 inputs we'll take from the user. If we specify the input function and give a name, it will appear in the settings window.
ठीक है. So you can change the values from these locations in the settings window rather than changing in the code. Now, once we have defined all this, we'll do a moving average calculation. For this, there is already a built-in function. I've already told that all the common functions have been categorized into a particular namespace. So the simple moving average is inside the technical analysis library, which is TA. So we mention the namespace name, we mention the dot, and we call out the function. Okay. And we want to calculate the moving average of close array, and moving average period is whatever the user has given. So this moving average period we have used here. We have mentioned the close array here, and we have called the function. Now in the MA variable, we'll have an array which is the moving average array of close for the period given by the user. Now we'll have the entry conditions. So we have to buy when the close is above the moving average. We have to sell when the close is less than moving average. So that I have mentioned here. Next, we need to compute the target price and stop loss price. We use a variable. This is a built-in variable called strategy.position average price. This, whenever your position is opened in TradingView via any strategy function, the average price will be in this built-in variable. So we'll first check whether this is a long entry. If it is a long entry, our target price has to be above the entry price. So we'll add the corresponding absolute value of profit to the strategy position average price. Okay. If it is a short signal, if this is a close and reverse system, so whenever this is this exits, we'll have a short entry. Okay. That is why we are given a condition like this here. So if it is long entry, we'll add the profit percentage to the average price. If it is a short signal, from the average price, we will decrease the absolute value of the profit percentage level. So if we multiply the close with target percentage divided by 100, we get the absolute value of the profit target. We adjust it with the strategy position average price variable to get the actual target price. Okay. Similarly, stop loss price we compute using the stop loss percentages. Again, same methodology. Only thing is that now this happens in reverse. For a long position, the stop price has to be below the entry price, which is what we have given here. We have reduced the stop loss value from the entry price. If it is a long signal, sorry, if it is a short signal, the stop price has to be above the entry price, which is why we are adding the stop loss absolute value to the position average price here. Okay. Next, we have to do something called XREM. XREM essentially means that we are removing the extra signals. Okay. I'll show you what happens if I disable this statement. Okay, I'm having some problem. Okay. Now we said that whenever the value is above, close value is above the moving average line,
we are going to have a long signal. Okay. So now if you see, all the candles here are above the moving average line. So if you write a condition to buy when the close is above the moving average line, that buy condition is going to be true for all these candles. We don't want that. Once we enter a long, we don't need another long until the next short signal. Okay. For this, we are using the xrem function. This is a custom function that I have coded. Essentially filters out excess signals in the buy and short array. Okay. So xrem function I have defined here. Okay, this is a custom user-defined function by me. Essentially removes all the excess signals between condition 1 and condition 2. Okay. So we have to remove all the excess signals from long entry to short entry and short entry to long entry. That's why we have two statements here. Here I have given plot statement to plot the blue colored moving average that you see on the screen. I have given two plot shape functions which shows arrows whenever there are buy and sell signals. Okay, so you can see the green arrows here. This is for long signal. You can see the red arrow here. Red arrow here which indicates short signal. Long entry, like I said, is when the close of the candle is above the moving average. Okay. The blue line is the moving average. Whenever a close is above the moving average, we will do a long signal. Okay. That is why we have a green arrow here. Okay. Likewise, if a candle is below the blue line or moving average, we'll have a short. Okay. So we have a red arrow here. This is what is plotted here. Okay. The dark red color and the blue color arrows that you see, these are automatically created by strategy functions when an order is placed. And like I said, the strategy file, the computation happens till the last historical candle. So whenever the short signal or buy signal is true in any one particular candle, the order happens only in the next candle. That is why you have the strategy order placement arrow one candle after the signal arrow. Okay. Then we are computing the absolute value of position size. So if we are long, the position size will be positive. If you are short, the position size will be negative. We are calling the absolute function from the mat namespace so that we always get a positive number for the position size. This value we'll use to close the open order in TradingView whenever an exit condition comes. Okay. Here we are defining 4 strings. Okay. Each of this corresponds to an order string from Dhan. So when long comes, we have to buy a future. So this string represents that. Okay. This I generated from Dhan web platform. The long exit message will have a sell. Right here you have a sell. Everything else remains the same. Just the transaction type changes to S. Again, for short, we need to do a sell. So this is S. The exit message we need to buy. Therefore, this is a B. Otherwise, the order strings are same except for the buy or sell, depending upon your context. Long you will buy, long exit you will sell, short you will short you will sell, short exit you will buy. Okay, so we have 4 strings generated from Dhan web platform. Okay. Next, we are writing the strategy order functions. We need to write this to place orders in broker emulator, and with all these functions, we are giving an alert message. Okay, this alert message is assigned with these strings that we have defined here.
Whenever these order functions are executed, this message goes to the alert window. Okay. From the alert window, we'll give the TradingView webhook URL. Whatever alert message we give, which is essentially this, that goes to the TradingView platform at the webhook URL, and the order will be placed based upon this JSON string that you have given. So first we'll check whether the position size is 0. That is, if there is no position, we'll first check whether the long entry is triggered. If so, we'll place an order to give a long signal. Okay. The strategy.order function places an order. The long is a name for the order. Strategy.long is a standard variable that defines that the direction is long. Alert message, like I said, is a predefined alert message that we have given. Similarly, for short order, we'll just change the direction of the signal. Again, a built-in variable strategy.short. We'll give a custom name called short to identify it on the chart. Once we have entered the signal, we need to exit if there is a profit target, stop loss, or a reversal entry. Okay, so that is what we are checking the next two statements. We check whether this is a long signal here. If it's a long signal, the position size will be positive. So I am using the standard variable to check whether the position size is greater than 0. If it is 0, I need to check first if a short signal or reversal came. If a reversal came, I'll sell using a strategy.short sell order. Again, fed with the corresponding alert message. If it's not a short, I'll check whether the profit target or stop loss is reached. For this, I'll use the strategy.exit function. I'll give a custom name. I'll mention the name of the order that I need to close. I'll mention the quantity, which is the absolute value of the current order that we have opened. We'll mention the stop loss price we computed against the stop parameter. We'll mention the profit target price computed against the limit parameter. Alert messages again given appropriately here. Similarly, if we are in a short position, we'll check for a long reversal. Long reversal happens, we go strategy.long, give the corresponding long message. Again, if it's a short position, long entry, long reversal doesn't happen, but a profit target or a stop loss happens, we do the stop loss price computed here and the target price computed here. Okay. Now, once you have given this, now if we need to place orders in the Dhan platform, we need to create alert. Okay. For that, you click on the alert window. Okay, we click on the alert window, create a new alert. From here, we will select the name of the indicator that we added to chart. Okay, we'll give a name. I'm giving a name Python. Okay, in this message, we have to add a placeholder function. Okay, this is given by TradingView. एक second.
Okay. So in the alert, we need to give this placeholder message from TradingView. Then in the notifications tab, there is a webhook URL. Here you have to paste the webhook URL that you copied over from Dhan platform. Okay. Then you click on create and an alert will appear on the alert tab. Okay. Now we are ready. Whenever this code generates a signal like short, long here, an order will be automatically placed in Dhan platform. Okay. So now I'll explain in Hindi once more. Just the alert creation part. हमने यहाँ पे कोड किया था, ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑर्डर फंक्शन दिए हैं यहाँ पे, सारे ऑर्डर फंक्शन पे अलर्ट मैसेज दिए हैं। ये अलर्ट मैसेज आप ट्रेडिंग व्यू के जो प्लेटफॉर्म है, वेब प्लेटफॉर्म है, उससे कॉपी करते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे हमने दिया है करस्पॉन्डिंग फंक्शंस पे। फिर यहाँ जाके अलर्ट क्रिएट करते हैं। अलर्ट में आप जो भी इंडिकेटर है उसको सेलेक्ट करते हैं। एक प्लेस होल्डर फंक्शन है ट्रेडिंग व्यू का, यहाँ पे वो लगाते हैं, ठीक है। जब भी अलर्ट मैसेज, अलर्ट ट्रिगर होगा ट्रेडिंग व्यू के कोड में, जो भी अलर्ट मैसेज हमने दिया है वो यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन टैब में जो भी वेबबुक यूआरएल है वहां पे जो भी मैसेज आपने दिया है वो जाएगा। ये वेबबुक यूआरएल आपको पेड प्लान में ही मिलेगा, फ्री प्लान है तो ये फीचर नहीं है। तो धन के सहारे अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रेड प्लेस करना है तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अबे अलर्ट सेट हुआ है। जब भी लाइव मार्केट में सिग्नल होगा तब यहाँ पे अलर्ट आएगा। अलर्ट आएगा तो जो भी आपने मैसेज दिया है वो ट्रेडिंग व्यू के वेबबुक यूआरएल के फीचर के सहारे धन के प्लेटफॉर्म में जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ओके। अगर आपको वीकली ऑप्शंस पे करना है तो आपको वीकली ऑप्शंस का जेसन जेसन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं धन के प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। होल्ड ऑन। आप ऑर्डर्स पे जाते हो, वेब बुक्स पे जाते हो, उसके नीचे आपको सेगमेंट्स मिलेगा, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, ये फ्यूचर्स पे जाके निफ्टी 50 सेलेक्ट करके नॉर्मल ऑर्डर सेलेक्ट करके जेसॉन जनरेट किया था यहाँ पे, ठीक है। अगर ऑप्शंस पे आपको ट्रेडिंग करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सेगमेंट आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट पे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और जनरेट लिखना पड़ेगा। और ये जो भी स्ट्रिंग है ना, इसको कॉपी करके आपको कोड में पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो। टाइम लैग जो होता है ट्रेडिंग व्यू में, जब भी अलर्ट आता है ट्रेडिंग व्यू से धन में करीब 4 सेकंड का डिले है। 4 सेकंड में अ, जो भी आपका ऑर्डर है वो ट्रेडिंग व्यू में प्लेस हो जाता है, ये मैंने देखा है। हमने कोड में फ्यूचर्स दिया है। अगर आपको यहाँ से आप जो भी वीक का है वहाँ का जेसॉन आप निकाल सकते हो। अगर ऑटोमेटिकली आपको वीक का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, आपको अलग सा फंक्शन लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग के पाइन में, और इस जेसन के साथ आपको कॉन्कैटनेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस्ड है, मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहूंगा, समय नहीं है। आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है।
अब मैंने क्वेश्चंस थोड़ा कुछ आंसर किया है, बाकी जो है अभी करूंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न कर सकते हो पाइन स्क्रिप्ट में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप पाइन में आपका नॉलेज है, कुछ मास्टरी है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न भी कोड से डिटेक्ट करके अलर्ट क्रिएट करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। और बहुत सारे कम्युनिटी ड्रिवन कोड्स है। ज्यादातर कॉमन पैटर्न्स जो है जिसके लिए कम्युनिटी पैटर्न्स है, वहां पे आपको बस ये अलर्ट वाला थिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। इंडिकेटर पे अगेन ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको इंडिकेटर में जो अलर्ट है वो ज्यादा सूटेड नहीं है ऐसे ऑर्डर लगाने के लिए। मैं स्ट्रैटेजी फाइल का ही यूज करता हूँ, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी पोजीशन साइज का नॉलेज होता है, आपका डायरेक्शन आपको पता चलता है बिल्ट इन वेरिएबल्स के सहारे। आप पोजीशन साइज के हिसाब से निकाल सकते हो, पोजीशन साइज स्केल इन स्केल आउट कर सकते हो। तो मैं ज्यादातर स्ट्रैटेजी फाइल का ही यूज करता हूँ, इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूँ। आपने जो भी कोड लिखा है, ठीक है, इसको सेव करके ऐड और अपडेट ऑन चार्ट करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। कनेक्शन ये अपडेट होने में कुछ टाइम लग रहा है, होल्ड ऑन। हाँ, मैं जो पाइन स्क्रिप्ट है वो आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। आप पाइन एडिटर में अप्लाई चेंजेस या ऐड टू चार्ट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये सब आपको दिखने लगेगा। फॉर अवर जीटी ऑर्डर्स, जीटीटी ऑर्डर्स हम अभी जो जेसन स्ट्रक्चर है जो धन ने दिया है उस पे नहीं कर सकते हैं, बट बस नॉर्मल मार्केट लिमिट स्टॉप लॉस ऐसे ऑर्डर्स लगा सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अलग सा कोडिंग करना पड़ेगा। मैंने अभी एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस और फिक्स्ड टारगेट का प्रोविजन दिया है कोड में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हम कर सकते हैं। मैं करीब 2 साल से ट्रेडिंग व्यू पाइन कोड के सहारे धन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन को समझने में जितना एफर्ट आप लगाओगे, उतनी आसानी से आपको इसमें मास्टरी हो जाएगी। प्रोग्रामिंग करने से ही आपको इसका नॉलेज बढ़ेगा। बस थियरी अगर आप सुनोगे पढ़ोगे तो उतनी आसानी से ये आ नहीं जाएगा। आपको पाइन स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, छोटी छोटी कोड लिखो, समझो कि कैसे ये काम होता है। फिर आप एक बार बेसिक्स आपका आपके समझ में आ गया तो कॉम्प्लेक्स स्टफ भी आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन पहला चीज जो है, हर दिन कोड करो, थोड़ा समय हर दिन इसके लिए बिताओ, तो आप भी करीब जितनी आपकी टैलेंट स्किल और एफर्ट आप लगाते हो उसके हिसाब से टाइम लगेगा। टाइम फ्रेम जो होता है यहाँ पे चार्ट पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कोड में कोई टाइम फ्रेम का रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे लगाओगे उसके हिसाब से सिग्नल्स आएगा। ठीक है। हाँ, अलर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस होगा। अलर्ट मैसेज हमने दिया है ट्रेडिंग का, जो भी जेसॉन स्ट्रक्चर है ट्रेडिंग के वेब प्लेटफॉर्म से कॉपी करके कोड में दिया है, उसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा डायरेक्टली ऑप्शंस में। एएमओ ऑर्डर्स पीएमओ ऑर्डर्स अभी इनेबल्ड नहीं है तो वो नहीं होगा। ये स्ट्रेटजी आई विल शेयर इन धन कम्युनिटी। यू कैन कॉपी इट एंड ऐड इट इन योर ट्रेडिंग चार्ट।
There are a lot of online resources. I've already mentioned the reference materials. So there is an official Pine reference given by TradingView. There is this custom coding library given by users and standard library given by TradingView, where you can take the code and see how this is done. We have a chat interface in TradingView. You can ask doubts about that. You can also, if you have any doubts, post in Dhan community. I'll respond to it as much as possible. You can get AI support as well. Yeah, I can share the code with you. You can do any kind of modifications to this code. You can add more filters to the code. It's up to you. C and P, again, you select from the done JSON interface. Okay, front-end interface, you will select whatever strike that you want to trade in, and corresponding JSON you will paste in code, and appropriate orders will be fired whenever alerts come. Yeah, you can post in community. I'll start a new thread sharing this code. Uh, Whatever question you have, I'll answer there. लेकिन जहां पे भी शॉर्ट या लॉन्ग मैंने कोड में लिखा है, वही ऑर्डर प्लेस होगा जिसका अलर्ट मैसेज मैंने पेस्ट किया है। ठीक है, अगर शॉर्ट करते वक्त मुझको पी बाई करना है तो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में जाके पुट ऑर्डर का जेसन स्ट्रिंग कॉपी करूंगा, उसको कोड में पेस्ट करूंगा, तो जब भी शॉर्ट आएगा बस पी ऑर्डर लगाएगा। ठीक है। नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट नहीं ओपन करना पड़ेगा। एक बार आप कोड करके अलर्ट लगा देते हो, अगर आपका चार्ट ओपन भी नहीं है, ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। ठीक है। ऑर्डर प्लेसमेंट वेबबुक से क्या होता है, ये अल्गो होता है। ठीक है, आपके इंटरफेरेंस के बिना ऑर्डर ऑटोमेटिकली फायर होता है। ठीक है, अगर आप जीटीटी फॉरवर्ड ऑर्डर लगाते हो, आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा। एक बार वो एग्जीक्यूट हो गया मैनुअली, उसके बाद एक्शंस लेना पड़ेगा। ये वाला जो है ऑटोमेटिकली होता है। आपको कोई पहली बार आप सेट कर दे, उसके बाद कोई काम नहीं करना पड़ेगा आपको, समय बच जाएगा। डन में 1 सेकंड चार्ट है। अभी ब्रोकर्स को बस 1 सेकंड इंटरवल में डेटा मिलता है, तो 1 सेकंड चार्ट है डन पे। टिक बाय टिक, एक टिक इज लाइक ए ट्रेड। ओके, ये नैनो सेकंड में एक टिक होता है, उतना तेजी से ब्रोकर को डेटा नहीं मिलता है। बस सेकंड्स डेटा है हर ब्रोकर के पास। ठीक है, टिक बाय टिक डेटा के लिए कोलोकेटेड सर्वर लेना पड़ता है। अगर ब्रोकर वो फीड देता है तो मिलता है आपको, पर ज्यादातर ब्रोकर्स बस 1 सेकंड का डेटा देता है मिनिमम लेवल पे। आप जो भी इंडिकेटर है उसके साथ लगा सकते हो। ये बस एक सैम्पल कोड है आपको दिखाने के लिए कि कैसे कोड लिखना है, कैसे ऑर्डर लगाना है। बेसिक कोड है। एंट्री एग्जिट कंडीशंस आप मॉडिफाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो, ऑर्डर स्ट्रिंग्स आप चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं कोड कम्युनिटी में शेयर करूंगा, आसानी से आप पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। कोई डाउट्स है कम्युनिटी में पूछो, मैं आपको कम्युनिटी में रिप्लाई कर दूंगा। एंगल ऑफ 30 और मोर, ये भी आप लगा सकते हो। कस्टम कोडिंग की बात है, जो भी कोड मैं देता हूँ उस पर कस्टम कोडिंग करो, वो आप कर सकते हो। अगर आप मैनुअली जो भी एल्गो ऑर्डर लगाता है, अगर अगर आप प्लेटफॉर्म में जाके मैनुअली उसको एग्जिट करता हो, एल्गो नहीं जान पाएगा। ठीक है, कोई फीडबैक नहीं है थन के ट्रेडिंग टर्मिनल से ट्रेडिंग व्यू पे। ये ओपन लूप कम्युनिकेशन होता है। तो
अगर आपने मैन्युअली क्लोज किया है तो ट्रेडिंग व्यू में आके आपको अलर्ट को क्लोज करना पड़ेगा, यानी पॉज करना पड़ेगा यहाँ पे, वरना ये ऑर्डर लगाता रहेगा। ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस भी आप बना सकते हो, कोडिंग की बात है, कस्टम कोडिंग की बात है। आप कैसे भी आपने आपका जो एंट्री और एक्सिट कंडीशन है कैसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड में जहां पे मैंने लॉन्ग एंट्री शॉर्ट एंट्री लिखा है ना, वहां पे आप जो भी कंडीशन दो वो काम कर जाएगा। आपको कोड समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आ, ये कंडीशंस डालना है, कैसे फिल्टर करना है, वो सब। ठीक है। अलर्ट सारा दिन रन करता रहेगा। अगर आप पाइन में एक अलर्ट लगाते हो फ्री यूजर्स के लिए, इवन पेड प्रो यूजर्स, आई थिंक 2 महीने का अलर्ट इंटरवल होता है, तो 2 महीने तक आपको अलर्ट चेंज करना नहीं पड़ेगा। धन का वेबबुक यूआरएल 30 डेज मैक्सिमम वैलिडिटी है, 30 डेज के बाद आपको वो अलर्ट और जेसन इंटरवल जो है, जेसन मैसेज जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप समझो हर महीने आपको चेंज करना पड़ेगा, वरना कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोड बस चलता रहेगा। धन पे कोई बैक टेस्टिंग फैसिलिटी अभी नहीं है। धन पे ट्रेडिंग व्यू पे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। आ, वही वही फीसिबल है। तो धन में इतना हिस्टोरिकल डेटा स्टोर नहीं होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई प्लेलिस्ट नहीं है यूट्यूब में, मेरी अपनी एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बस और वीडियोस ऐड करने हैं, कोई ऐसा वीडियो प्लेलिस्ट नहीं है। अगर आप धन कम्युनिटी में आपका रिक्वायरमेंट बताओगे तो मैं दूसरे वीडियो भी करूँगा और आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, ऑटोमेटिक ऑर्डर्स लगाने के लिए टीवी पेड सब्सक्रिप्शन का होना जरूरी है। हम ऑर्डर लगाते हैं वेबबुक यूआरएल में, वो वेबबुक यूआरएल फीचर ट्रेडिंग व्यू पेड यूजर्स को ही देता है, तो टीवी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, प्रो सब्सक्रिप्शन मिनिमम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। मेरा पीएनएल जो है, जो वो मेरा साइट पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। हाँ, यू नीड टू टेक टीवी सब्सक्रिप्शन। पेड सब्सक्रिप्शन इज needed for webbook URL integration. You can run any number of strategies. There is no limit on it. In free, you cannot do this. You can generate alerts, but webbook URL is not provided by TradingView for free users. Quantity is also set in code. You can mention whatever quantity in the strategy.order function. There is a parameter for quantity. You can add it there. See, this is not a session to see my PNL. If you want, you can come online. I can show my PNL, no problem. But let's not do it in this session. This session is for learning Pine. Okay. See, if you have multiple Dhan accounts, you can generate multiple URLs, multiple JSONs, create multiple alerts in TradingView, and you can fire orders in all those accounts from a single TradingView account. Re-entries you can set in Pine code. There is a specific function to limit the number of trades in a day. So that is possible in Pine code. There are no limits on strategies or number of scripts that you can fire from TradingView Pine. Multiple Dhan accounts, like I said, you can fire from single account if you use separate webhook URLs and JSONs. See, when an alert comes in Dhan, sorry, in TradingView, it takes time for the alert message to get to Dhan.
and then order to be placed. I have seen a difference of about 4 seconds between direct order placement in Dhan and firing from TradingView to Dhan. Algo test is more easy because it's a codeless platform. You can click on options and create algo strategies. But the problem is you cannot create customized strategies like you can do with Pine. Pine allows much finer granular control on your strategy. Okay. एक्सेल पे आप ऑर्डर नहीं लगा सकते हो पाइन स्ट्रिप में मेरी नॉलेज के हिसाब से आप बस ट्रेडिंग व्यू से अलर्ट क्रिएट कर सकते हो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो No, I don't do any live streaming. See, I'm not a SEBI registered RA. I don't do any tips. I don't do any copy trades. I don't publish my daily trading ideas on YouTube or any streaming source. This is specifically to help you get started with Pine, help you code your own strategies, help you to fire orders from your end using strategies that you have backtested in TradingView, which you can deploy with confidence. Abhishek, I think we are done. I've answered most questions. Okay, Shyam sir. Uh, Thank you everyone for joining in for the session. It was a great session and it was wonderful to have you, Shyam. Thank you. Thank you, Abhishek. Yes. So guys, subscribe to our channel and please join our madefortrade.in community. The link is pinned in the comment section below. Thank you. Thank you for joining in, guys. Yeah. Thank you, Abhishek. Thank you all.